बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ पे भी हमने बात छोड़ी थी वहाँ से हम दोबारा इसको शुरू करते हैं। मैं बात कर रहा था कि फैटी फूड्स हैं बेसिकली ये प्रॉब्लम काज करती हैं और इनको जो है वो डाइट के अंदर जो है वो मैनेज करने की ज़रूरत है। तो हो सकता है कि एक इंसान डाइटरी मैनेजमेंट के थ्रू वो गाल स्टोन्स का लेवल या जो इन्फ्लेमेशन है उसका लेवल इतना कम रखने में कामयाब हो जाता है कि वो रेस्ट ऑफ द लाइफ जो है वो बगैर सर्जिकल रिमूवल या इस तरह की चीज़ों से वो गुजार सकता है। अदरवाइज अगर ये चीज़ वर्क नहीं करती तो फिर आखिरी सोल्यूशन जो है ना वो सिर्फ एक यही बचेगा कि जिसमें इंडिविजुअल जो है उसका वो सर्जिकली गाल ब्लैडर जो है उसको रिमूव करना पड़ेगा। मॉडिफिकेशन में मेन मॉडिफिकेशन जो वो फैट की आ जाती है और फैट का लेवल जो है ये 40 to 50 ग्राम पर डे के हिसाब से सजेस्ट किया जाता है। कुछ लिटरेचर में हमें ये 30 to 60 भी मिलता है। तो ऑलमोस्ट आप कह लें कि 50% ऑफ दी जो फैट कंटेंट है उसको कट करना है। नॉर्मल इंडिविजुअल जो है वो अगर 90 या 100 ग्राम के करीब फैट ले रहा है तो उसने फैट का लेवल जो है वो इसको जीरो करना मकसद नहीं है, कम करना जाना वो, और कम कितना, ऑलमोस्ट 0.5%। रिस्ट्रिक्शन ऑफ गैस फार्मिंग फूड्स शुड बी इंडिविजुअलाइज्ड। ठीक है, ये इसलिए कहा गया कि हो सकता है कि किसी के अंदर कोई चीज खाने से गैस प्रोडक्शन नहीं होती तो उसको फिर वो फूड आइटम जो है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और अगर कोई बंदा जो है वो वेट लॉस भी उसको सजेस्ट किया जाता है कि भाई पहले अपना वजन जो है वो 5-7 किलो 10 किलो जो है वो कम करो ताकि जो स्ट्रेस है ऑर्गन्स के ऊपर जो है उसको किसी तरीके से कम किया जा सके। तो उस वाले केस में कैलोरीज इनटेक जो है उसको भी लोअर करना होगा। तो मॉडिफिकेशन मेन फैट कंटेंट और सेकंड नंबर पे वेट रिडक्शन इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, ये एक और मुझे मिला था लिटरेचर मैंने कहीं से और इसको यहाँ पे शो करना मुनासिब समझा है कि जिसमें उन्होंने फैट कंटेंट जो है वो 30 to 60 ग्राम्स पर डे के हिसाब से सजेस्ट किया हुआ है। ठीक है, और ऐसी फूड या ऐसे स्पाइसेस, ठीक है, ऐसे कॉन्डिमेंट्स जो इरिटेट करते हैं या पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट है उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं या गैस या डिस्टेंशन उसको काज करते हैं, उनका लेवल भी कम करना होगा। तो अभी हमने देखा कि नंबर 1 हमने फैट का लेवल कम करना है, नंबर 2 हमने फूड के अंदर जो स्पाइसेस और जो इरिटेंट्स हैं उनका लेवल जो है वो कम करना होगा। और इन केस ऑफ एक्यूट अ लिक्विड डाइट ऑफ 2 to 3 liters per day is suggested. 30 to 40 grams of protein should be ingested per day. 200 to 300 grams of carbohydrates should be ingested per day. तो ये तीनों न्यूट्रिएंट्स जो है वो यहाँ पे आ गए। फैट कितनी होनी चाहिए, प्रोटीन कितनी होनी चाहिए और कार्बोहाइड्रेट्स कितनी होनी चाहिए। तो ये जनरल है, स्टिल इंडिविजुअल को देख के इनका लेवल जो है उसको एडजस्ट करना होता है, कस्टमाइज्ड डाइट प्लान जो है वो बनाना होगा। देयर शुड बी एन अवॉइडेंस ऑफ पेस्ट्रीज नट्स। तो ये जितनी भी चीजें इसने लिखी है ना, या तो ये प्रोसेस फूड है जिनके अंदर आप समझते हैं कि एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं और फैट का कंटेंट प्रेफरेबली वो सैचुरेटेड फैट उनके अंदर यूज की जाती है। इसके अलावा इनके अंदर ट्रांस फैट्स बनने के चांसेस होते हैं। तो नट्स नो डाउट अच्छे होते हैं, लेकिन नट्स में भी क्योंकि फैट कंटेंट जो है वो 40-50% की रेंज में चला जाता है, तो इसलिए इसको भी सजेस्ट किया जाता है कि इनको भी कम यूज किया जाए। Patients are advised to prepare meals by baking, boiling, steaming and only trimmed or lean meat। तो ये सारी आप माशाल्लाह समझते हैं कि ये जो उसने मेथड बताए हैं ये वो मेथड है, इसमें किसी ने फ्राई का वर्ड यूज नहीं किया कि इसमें ऑयल का कंटेंट ज्यादा होता है। तो हम फ्राइंग की निस्बत बेकिंग अगर कर लेते हैं तो बेकिंग से वो ऑयल का कंटेंट कम किया जा सकता है। इसी तरह बॉइलिंग जो है वो उसके लिए वाटर जो है एज अ फ्राइंग मीडियम यूज किया जा रहा है रादर देन ऑयल। स्टीमिंग ये भी कम क्वांटिटी के अंदर जो है वो क्या लेंगे फूड स्टफ को जो है वो कुक करना। फैट्स की टाइप्स की अगर हम बात करें तो मैंने कहा था कि गुड क्वालिटी फैट जो है उसके ऊपर फोकस होना चाहिए।
और गुड क्वालिटी फैट जो है उसमें सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में अगेन मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड, इनका एक खास प्रोपोर्शन होना चाहिए। तो कोई भी चीज जो एक्सट्रीम साइड पे चली जाती है वो नुकसानदेह होती है। ठीक है, तो मैं सैचुरेटेड की अगर एग्जांपल दूं तो आपके देसी घी और जो बनास्पति घी वो इसकी एग्जांपल्स हैं। अगर मैं ऐसी फूड कहूँ कि जिसमें अनसैचुरेटेड ज्यादा है, और अनसैचुरेटेड में भी आगे दो कैटेगरीज हैं, मोनो अनसैचुरेटेड तो उसमें ऑलिव ऑयल बेस्ट एग्जांपल है, और अगर पॉली अनसैचुरेटेड कहें तो इसमें सोयाबीन, कैनोला, सनफ्लावर जो है ना वो इसके बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। तो सबसे बेहतर अप्रोच क्या है कि हम ऑयल जो है उसको खुद तैयार करें, हम उसका प्रोपोर्शन जो है वो मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड का लिटरेचर को विजिट करके रिकमेंडेशंस के हिसाब से उसकी ब्लेंडिंग करें। तो ब्लेंडेड ऑयल जो है ना वो बेहतर होगा, क्योंकि वो हर जो कंपोनेंट है उसको बेहतर लेवल में सप्लाई करेगा। तो रिकमेंडेशंस जो है ये अनसैचुरेटेड फैट जो है उसके बारे में उसने उसने गुड फैट का वर्ड यूज किया हुआ है, और कहा कि उसको रिप्लेस करें आप, मैक्सिमम जो सैचुरेटेड फैट है उसको रिप्लेस करते हैं अनसैचुरेटेड फैट के साथ। सैचुरेटेड फैट अगर हम देखें तो ये एनिमल सोर्सेज इनमें ये ज्यादा पाई जाती है, और अगर प्लांट सोर्सेज देखें तो ये पाम ऑयल और कोकोनट ऑयल। जी, तो एक कॉलम है जिसमें हम फूड ग्रुप्स को शो ऑफ करते हैं, और दूसरा कॉलम है जिसमें हमने फूड अलाउड लिखनी होती है, और तीसरा कॉलम है जहाँ पे हम फूड को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ब्रेड, सीरियल और जो ग्रेन वाला ग्रुप है इसमें उन्होंने रिस्ट्रिक्शन के अंदर सिर्फ ये चीज ऐड की है कि उनमें फैट फैट का एलिमेंट जो है वो एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए। जैसे पराठा बनाया जाता है या पूड़ी, ये बड़ी ऑयल रिच प्रोडक्ट्स हैं, इनको रिस्ट्रिक्ट किया है। इसके अलावा बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, उनमें भी फैट का लेवल जो है। अब मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि हम जो कुकीज खाते हैं या बिस्किट्स खाते हैं, ऑलमोस्ट 25% इनके अंदर जो है वो फैट होती है, इसी रेशो के अंदर इनके अंदर शुगर होती है, और बाकी 50% के करीब जो है वो वाइट फ्लावर या जिसको हम मैदा बोलते हैं वो एग्जिस्ट करता है। तो इनको हम किसी सेंस में भी अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन कन्वीनियंट फूड्स हैं, रेडी टू यूज हैं, रेडीली अवेलेबल हैं, स्नैक्स के तौर पे भी यूज की जा सकती हैं। तो ये वजह है जिसकी जो जिनकी वजह से ये पॉपुलर हैं, और पॉपुलैरिटी की वजह से ये सोसाइटी में काफी यूज की जाती हैं। तो जो लाइट वेरिएंट है, लाइट वेरिएंट ये हमें कहता है कि इसके अंदर ब्रेड, नान, रोटी, चपाती, रस्क, खिचड़ी, राइस, पास्ता, नूडल्स, यानी ये वो सारी चीजें हैं जिनके अंदर फैट का कंटेंट जो है वो कम साइड पे होता है। मिल्क प्रोडक्ट्स में कोई पाबंदी नहीं है एक्सेप्ट कि उसमें मलाई या मलाई, ठीक है, ये नहीं आनी चाहिए। और मीट में अगर देखा जाए तो लीन मीट की बात की जाती है, लीन मीट जिसमें चर्बी जो है वो ज्यादा ना हो, ठीक है। तो विजिबल फैट जो होती है वो उसमें नजर नहीं आनी चाहिए। और इसके अलावा जब आपने ये जो प्रोडक्ट्स हैं स्पेशली कोरमा, बिरयानी, पुलाव, इनके अंदर ना सिर्फ फैट का कंटेंट ज्यादा होता है बल्कि स्पाइसेस का लेवल भी हाई होता है, तो इनको भी डिस्करेज किया जा रहा है। आप वाइट राइस हैं, बॉइल्ड राइस हैं, इनको आप यूज कर सकते हैं क्योंकि वो गाल ब्लैडर पे जाके इतना स्ट्रेस नहीं डालेंगे। दाल जो है उसमें भी वो तड़का लगाने वाली बात कहता है जी ना करें, स्पाइसेस जो है वो इतने ज्यादा इसके अंदर ऐड ना करें। वेजिटेबल्स में भी अगेन कोई मैसेज है, डीप फ्राइड वेजिटेबल्स जो हैं ये डिस्करेज हैं, और इसके अलावा वेजिटेबल रॉ फॉर्म में जितनी मर्जी खाएं, और जिनको हम कम क्वांटिटी में कुक कर रहे हैं ऑयल डाल के, या बॉइल्ड वेजिटेबल्स जो हैं, स्टीम्ड वेजिटेबल्स जो हैं, ये बेहतर ऑप्शन है।
फ्रेश फ्रूट्स कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके अंदर। ड्राइड फ्रूट्स में से एक्सेप्ट वो नट्स जिनके अंदर ऑयल कंटेंट ज्यादा है, ठीक है, उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। फैट्स एंड ऑयल्स के अंदर भी जैसा कि हमने पहले डाइटरी एडवाइसेस में देखा है कि एक्सेसिव साइड को मना किया गया, ठीक है, अदरवाइज मॉडरेशन के अंदर रहते हुए इसकी क्वांटिटी जो है अप टू 30 to 40 ग्राम जो है ना वो सजेस्ट की गई है। डिजर्ट्स एंड स्वीट्स जो हैं ये भी बेसिकली कह लें कि इनके अंदर मीठा जो है वो ज्यादा होता है, लेकिन कुछ हमारी स्वीट डिशेज ऐसी हैं कि जिनके अंदर ऑयल कंटेंट ज्यादा होता है, तो जैसे हलवा, खीर, खोया, गजरेला, ये इस तरह के जो प्रोडक्ट्स अभी है ये सीजन विंटर सीजन के अंदर हमने सब ने इनको एंजॉय किया है, तो इनका लेवल जो है वो उस इंडिविजुअल को कम से कम यूज करना चाहिए। फ्लूइड्स एंड ड्रिंक्स जो हैं इसमें फ्लूइड्स जो सिंपल वाटर है उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे फ्लूइड्स के जो डायोरेटिक, एंटी डायोरेटिक्स, एंटी न्यूट्रिएंट्स या इस तरह के फैक्टर्स अपने अंदर रखते हैं और जिनमें शुगर का लेवल जो है वो हायर साइड पे चला जाता है, इनको जो है वो डिस्करेज किया जाता है। तो ये बेसिकली भाई हमारा डाइटरी प्लान था इनके बारे में। ये कुछ जनरल इन्फोग्राम्स जो है वो नेट पे हमें बहुत सारे मिल जाते हैं, और जब आप किसी जगह पे प्रैक्टिस करेंगे फ्यूचर में तो इस तरह की चीजें जो है वो आपको प्रिंट आउट लेके वहां पे लगा सकते हैं। तो फूड्स टू अवॉइड इफ यू हैव गॉलस्टोन्स, इसमें बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन जो है वो उन्होंने फूड्स की दे दी है कि जिनको यूज नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच फ्राइज हैं, हाई फैट प्रोसेस्ड मीट है, हाई फैट कन्वेंशनल डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, पिज्जा है, इसके अंदर मीट प्रोडक्ट्स हैं, पाम ऑयल जो है वो बहुत सारी फूड के अंदर जो है वो यूज किया गया होता है। इसके अलावा फूड्स रिच इन शुगर जो है उनको डिस्करेज किया गया है, और ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो ज्यादा प्रोसेस्ड फॉर्म में और ड्यूरिंग प्रोसेसिंग उनके अंदर ट्रांस फैट्स बनने के चांसेस होते हैं, ये डिस्करेज की गई हैं। तो अगर आप डाइट चार्ट किसी को बना के देते हैं तो ये एक अच्छी अप्रोच है जिसमें विजुअलाइज फॉर्म में जो है इंडिविजुअल को, नो डाउट आप एक लिस्ट भी बना के देंगे, लेकिन इसमें अच्छे तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया है कि आपको ब्रेकफास्ट कब करना चाहिए, स्नैक्स कब होना चाहिए, आपका जो लंच है उसका टाइम क्या होना चाहिए, और फिर आपका सेकंड स्नैक टाइम जो है वो, और लास्ट में आपका मील जो है वो, और इसमें रिफ्लेक्शन जो है वो आप अंदर चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिजीजेस, कि इसमें एक आइडियल सा यहाँ पे पिक्टोरल रिफ्लेक्शन हो जाए कि नाश्ते में कौन सी चीजें होनी चाहिए, स्नैक्स में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, और सेकंड साइड पे उसने न्यूट्रिएंट वाइज लिख दिया है, तो इसमें से हमें कैलोरीज की भी कैलकुलेशन करने में सहूलत हो जाती है, और इसमें जो हमारे रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं जो बहुत ही ज्यादा एसेंशियल हैं वो भी हमें यहाँ से मिल जाते हैं। तो ये एक अच्छी अप्रोच है कि फ्यूचर में आप अगर इस तरीके से किसी को अपना एक डाइट चार्ट बना के देते हैं तो कंप्लायंस करना जो है वो ईजी होगा। अब मैनेजमेंट की तो हमने बात कर ली है, लेकिन बाज जगह पे मैनेजमेंट से काम आगे निकल जाता है, तो फिर वो क्योर वाली साइड आती है, ट्रीटमेंट वाली साइड आती है, ठीक है। तो मैनेजमेंट में कुछ लोग जो है वो क्योर वाली साइड पे अगर हम देखें तो कुछ लोगों ने ये आप इनको टोटके कह लें या उनके कुछ ऐसी रेसिपीज कह लें कि जिनको लोगों ने आजमाया हुआ है और उन्होंने कंफर्टेबल फील किया है इस तरह की इश्यूज के अंदर। तो इसमें बीट रूट और कैरेट जूस है ना, इसको सजेस्ट किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो यूज करना चाहिए। ग्रेप फ्रूट का भाई जूस जो है उसको बड़ा सजेस्ट किया जाता है इस वाले इश्यूज के अंदर। एप्पल सीडर मार्केट में या पाकिस्तान में भी अवेलेबल होना शुरू हो गया है। विनीगर और एप्पल जूस, ये बेसिकली इनका कम्बिनेशन अगर हम कर लें विनीगर का और एप्पल जूस का, तो हम एप्पल सीडर जो है या साइडर जो है उसको हम खुद भी तैयार कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन जो हमारे पास फिर अब आ जाएगा वो इसका सर्जिकल रिमूवल है, और सर्जिकल रिमूवल के अंदर डिफरेंट अप्रोचेस जो है वो यूज होती हैं। तो एक अप्रोच यहाँ पे इसने इंट्रा कार्पोरियल लेथोट्राइपोसी ट्रायोप्सी, लेथोट्रायोप्सी जो है ये वो अप्रोच है कि जिसमें रेडिएशंस को यूज किया जाता है, और रेडिएशंस के थ्रू जो है वो स्टोन्स को तोड़ के इनका साइज जो है वो इतना छोटा कर दिया जाता है कि इनको बॉडी से जो है वो
बाद में रिमूव कर दिया जाता है। ये कुछ फिर फूड्स की लिस्टिंग बनी हुई है, किन फूड को जो है ना वो कम यूज करना चाहिए, या अगर सीवियर केसेस है तो फिर रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। तो ये प्रेजेंटेशन जो हमारी ये कंप्लीट हो गई है टॉपिक के हवाले से जो बात थी। एक बार फिर मैं वो कोशिश कर लेता हूँ जो हमारी वीडियो के अंदर जो है वो कुछ डिस्टर्बेंस आई थी, अगर कुछ चल जाती है तो फिर आपको शो ऑफ कर देते हैं। इसमें ये कोलीलेथिएसिस के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं, गाल स्टोन्स के। In today's video, we'll be talking about gallstones, which is also known as cholelithiasis. So let's get started. So before we get into the specifics of what the disease is all about, let's take a closer look at the word cholelithiasis. So the word cholelithiasis is Greek-derived gastro. In today's video, hey guys, and welcome to How to Gastro. In today's video, we'll be talking about gallstones, which is also known as cholelithiasis. So let's get started. So before we get into the specifics of what the disease is all about, let's take a closer look at the word cholelithiasis. So the word cholelithiasis is Greek-derived, so it has Greek roots, and chola means bile, and lithos means stone. So if we put that together, we get bile stones, or stones of the gallbladder. So that is why gallstones is also referred to as cholelithiasis. So what are gallstones? Gallstones are the hardened deposits, which are stones of digestive fluid that can form within your gallbladder. So if we take a closer look at this video that's playing on the right side of my screen, we see the gallbladder, which stores the bile. And because the bile is stored in here for long periods of time, these little hardened deposits develop from the bile fluid. And this is actually what the gallstones are these hardened deposits of digestive fluid that are found within the gallbladder. Now let's talk about the types of gallstones. The first one are the cholesterol stones, and the second one are the pigment stones. So the cholesterol stones actually make up the majority of all gallstones, about 80% of them, and they form when there's too much cholesterol in the bile. The pigment stones, however, form when there's excess bilirubin in the bile. And if you take a closer look at this little bubble on my right side of the screen, it says, according to Harvard Health publication, 80% of gallstones are made up of cholesterol. The other 20% are made up of calcium salts and bilirubin. So the majority of gallstones look like this. They are cholesterol calculi, or stones, another word for calculi. So they're usually these white, yellowish, hardened deposits. And these are what the pigment stones. They are made up of bilirubin and other calcium salts. So they usually stain dark. So moving on, let's talk about some signs and symptoms of gallstones. So the first symptom is usually pain in the upper right abdomen, and this is usually the area that's affected because that is where the gallbladder sits in the body, just beneath the liver. The patient may also experience nausea and vomiting, dark urine and clay-colored stools, stomach pain, burping, diarrhea, and indigestion. So how can one go about diagnosing a gallstone disease? So the blood test may be used to look for signs of infection, obstruction, pancreatitis, or jaundice. So because these stones actually go on to obstruct various ducts, so let's go back to the original video. So because these gallstones actually get stuck within these multiple ducts, it will go on to cause a stasis of bile within the gallbladder, and eventually the gallbladder will become increased in will start to expand and inflame and become infected. So this is what the cholecystitis, or the infection of the gallbladder, is. So a blood test will show us the sign of infection. This gallstone can also go on to block the pancreatic duct, which is down here, and this can cause the onset of pancreatitis for the patient. So there will also be an increase in bilirubin, because if we have a stasis of bile, we're going to have increased values of bilirubin in the blood. So these are all markers in the blood that may indicate the gallstone disease. So the ultrasound can also be used, and this is the best test to examine the gallbladder for stones.
And here we look for gallbladder inflammation, the size of the bile ducts, and the presence of stones with patient symptoms. So if we take a closer look at this image on the bottom right of my screen, we see the ultrasound of 2 gallstones within the gallbladder, and it says the stones are dependently located and show posterior acoustic shadowing, allowing them to be differentiated from gallbladder polyps. So this is actually the shadowing that they're talking about. So usually when we have a hardened deposit there, such as a stone, it's shadowing. What's happening within the gallbladder. Continuing with diagnosis techniques, we can also use CT scan, and this will show the gallbladder and the biliary ducts and can detect gallstones, blockages, and other complications. We may also do retrograde cholangiopancreatography, CP, and in this process, a device injects a temporary dye into the biliary ducts, and the dye makes it easier to see any stones in the ducts when x-rays are taken. And sometimes a stone can actually be removed during this procedure. So if we take a closer look at this image in the middle of my screen, we see what the ERCP process looks like. So the endoscope is inserted through the mouth into the duodenum, which is down here, and we are able to access the biliary ducts. And once we enter the biliary ducts, we can inject the dye. And if there are any blockages where the dye does not pick up on the x-rays, we know that it is most probably attributed to the presence of a stone. And if you look at this image on my left, this is actually a CT scan, which demonstrates the appearance of numerous rounded high-density ball-like structures within the gallbladder. And we see it right here. This is actually multiple. It was a gallbladder inflammation, blockage of the bowel ducts, stones have moved from the bowel ducts into the intestine. And treatment options can include a cholecystectomy, which is the surgical removal of the gallbladder. So if these patients do have gallstones, but they're tiny little stones that are found within the gallbladder, and the patient is asymptomatic, we don't really need to treat the patient because we don't deal with something that is harm. Only if we have the onset of cholecystitis or some sort of pain and discomfort in the patient, then we will options. First treatment option is a cholecystectomy, and this is the surgical removal of the gallbladder. So as you can see in this image on my right, we operate and we dissect the gallbladder completely. The bile will drain directly into the duodenum. So this is what a dissected gallbladder looks like, and as you can see here, it's full of gallstones. We can also try treatment with ursodeoxycholic acid, and this is helpful in patients who have because it can sometimes be slowly dissolved with ursodeoxycholic acid. This type of treatment, which is known as dissolution, may take up to 24 months to be effective. So over time, this medication can. So as we mentioned in the diagnostic procedures, we can actually treat the patient with ERCP as well. So here, the flexible fiber should go into the mouth through the digestive system and into the gallbladder. And if you take a closer look at this image on my left, we see all these stones within the gallbladder, and we see a stone here in the common bile duct. And this is actually called the ampulla of Barter, where the bile duct actually meets the duodenum. And here, how the stone here is easily removed by the ERC process. So a wide line sphincteratome is inserted through, a balloon is inflated and it pulls downwards, so it actually removes that gallstone into the duodenum so it can be passed down through the feces. And the last treatment technique is called a lithiasis, and this is when ultrasonic shock waves are at the gallstones, which can break them up, and if the gallstones become small enough, passing. जी हमारा रबानी भाई सुन रहे हो आप? जी सर। हाँ जी, आप बताएं बेटा क्या मैसेज था इसके अंदर? हाँ जी, कोई इसको एलैबोरेट करना चाहे? कोई नहीं बोलना चाहता? सर
सर इसमें हमने ऑलमोस्ट जो है वो 3 फेजेस कवर किए हैं। ठीक है। पहले कोलीलिथियासिस, फिर कोलीसिस्टाइटिस और उसके बाद कोलीसिस्टेक्टमी। सबसे पहले कोलीलिथियासिस में ये था कि आप में कोई भी गॉल स्टोन की प्रेजेंस है। उसके बाद कोलीसिस्टाइटिस में इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर हो जाती है और कोलीसिस्टेक्टमी लास्ट प्रोसेस है जिसमें हम गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देते हैं। और इसमें हमने पैंक्रियाज के डिफरेंट पार्ट्स देखे हैं कि 3 पार्ट्स हैं पैंक्रियाज के, एक फंडस है, बॉडी है और नेक है। और फंडस लास्ट पार्ट है, बॉडी मिडल है और नेक जो है वो जिससे वो सिस्टिक डक्ट स्टार्ट होती है वो वाली है। और सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट दोनों मिलके कॉमन बाइल डक्ट बना देती हैं। जी उसके बाद उसमें जो नर्व्स की बेटा, सारी इनोवेशंस। थैंक यू बेटा। मुजाहिदुल इस्लाम साहब भाई, मुजाहिद आपको मेरी आवाज आ रही है? मुजाहिदुल इस्लाम, क्या मुझे सुन रहे हैं? चलें जी, मुजाहिद साहब तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। जैनब बीबी भाई, जैनब, जैनब बीबी भाई, आवाज आ रही है आपको? जैनब भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। चलें, इस सेकंड जो है इसका हम वो शुरू करते हैं। सेकंड कंपोनेंट जो था हमारा वो कोलिसिस्टाइटिस के बारे में था, जिसको हमने इन्फ्लेमेशन का नाम दिया था। तो इसको भी आप इसकी एक वीडियो आपको शो करते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज्यादा बेहतर हो जाए। Hey guys, and welcome to Gastro. In today's video, we'll be talking about cholecystitis. So let's get started. So before we get into the specifics of the disease, let's take a closer look at what cholecystitis actually means. So the word cholecystitis is actually a Greek word, and the first part of it, which is cholecyst, means gallbladder, and itis means inflammation. So if we bring those two parts together, we get cholecystitis, which means the inflammation of the gallbladder. And what is the gallbladder, you may ask? Let's take a closer look at what the gallbladder is all about. So the gallbladder is a small pouch-like structure that sits just underneath the liver. It is responsible in storing the bile produced by the liver. The bile is important because it helps to digest the fats we consume. In response to certain signals, the gallbladder squeezes the stored bile into the small intestine through a series of tubes called ducts. So if we take a closer look at this picture on my left, we see where the gallbladder is situated here, just beneath the liver. And we see these little ducts which come out of the gallbladder and actually join into the small intestine. So the gallbladder is responsible in storing and secreting the bile. So the bile is produced by the liver, it then gets stored in the gallbladder, and when we consume any sort of fatty foods, the bile is secreted into the intestine to help to digest or break down those fats. So that is the function and the definition of the gallbladder in the body. So now let's talk about what is cholecystitis. So as we mentioned before, cholecystitis is the inflammation of the gallbladder. When the drainage pathway for the bile stored in the gallbladder, called the cystic duct, becomes blocked, usually by a gallstone and sometimes in rare cases by a tumor, the gallbladder becomes swollen and maybe getting stuck in one of those ducts, or uveitis is. It's that situated in the body. Patient may also have clay-colored stools. They have changes in their stool and also changes in the color of the urine as well. So the urine is usually darker and the stool becomes clay-colored. They may also have signs and symptoms of vomiting, nausea,
And fever, of course, if we have infection or inflammation in the body, it's going to cause the fever and leukocytosis, or the increase of white blood cells. There's also going to be the yellowing of the skin and the white of the eyes, which is that is because of the increase in bilirubin. The pain will also typically occur after a meal because, as we said, the gallbladder stores the bile, and after we eat a high-fatty meal or any sort of meal, the gallbladder will start to secrete the bile in response to that signal of food intake. So that is why the pain is typically after a meal. The patient may also experience chills and shivers and abdominal bloating. And these are the 4 classic F risk factors for cholecystitis development. So now let's talk about the diagnosis of cholecystitis. So the first thing we can use is the blood test, and here we will have the increase in the white blood cell count, and this is a sign of inflammation and infection in the body. So the liver function test will also show increased values in the liver enzymes, which are the ALT or alanine aminotransferase and aspartate aminotransferase or AST levels, as well as bilirubin. Because that bilirubin will also be increased, we'll have the yellowing of the skin and the mucosas. We can also do an abdominal ultrasound to diagnose the patient, and this is usually used to identify signs of inflammation involving the gallbladder, and it's very good to see free fluid in that space. An abdominal CT, which can help identify the inflammation within the gallbladder, or can also identify the blocked bile flow, and sometimes it can also show the gallstones. We can also use magnetic resonance cholangiopancreatography, and that is called the MRCP, but it's showing gallstones, gallbladder. And at the hospital, the patient will be required to undergo a fasting period, and this takes the stress off the gallbladder. इसमें भाई ये प्रोसीजर बता रहे हैं. We said that the gallbladder is stimulated the moment we start to intake any sort of food. So in order to give that gallbladder a chance to rest and a chance to settle down a bit, we will ask the patient to fast. So we can also do fluid replacement therapy, and this is in the form of an IV drip. So an IV drip will be established through which fluids and electrolytes can be administered, and this helps to prevent dehydration and electrolyte imbalances. So usually the patient with the inflamed gallbladder may also have an infection locally at the site of the gallbladder, the inflammation and infection. So we will have to treat this with antibiotics. So the antibiotics are used to fight the infection. We can also give pain relievers, and this can help control the pain until the inflammation starts to cool down. We can also do the gallbladder stone removal, and this is a procedure called the endoscopic retrograde cholangiopancreatography. So remember, we spoke about this technique in the diagnosis. We can also use this technique to remove any small stones that may be blocking the bile ducts or the cystic ducts. So if you take a closer look at this picture on my left, you see what the ERCP process looks like. So the endoscope is inserted through the mouth into the duodenum, and once it's अच्छा भाई, हमारे पास तकरीबन 4 to 5 मिनट्स रह गए हैं इस सेशन को ख़त्म करने में, तो आप काइंडली अपनी अटेंडेंस जो है ना उसको दोबारा मार्क कर दें. मैसेज के अंदर एजी नंबर लिख के अटेंडेंस मार्क कर दें. मैं तीसरी बार भी जो है ना वो सेशन शुरू करूंगा. 11:20 तक हमारी क्लास, 12:10 तक ऑफिशियली हमारी क्लास होती है, तो उसमें मैं 1-2 वीडियो आपके साथ रियल टाइम वीडियो जो है ना उसको शेयर कर देता हूँ. तो ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव थी. इनको मैं कोशिश करता हूँ आपको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जो है ना, क्योंकि इनका साइज ज़्यादा है, या इनका जो लिंक है वो आपके साथ शेयर कर दिया जाए. तीसरा हमारे पास जो कंपोनेंट था वो इसकी सर्जिकल रिमूवल कह लें, अगर नई कोई चीज़ कवर की जा रही. जी Hello, and welcome to Surgery Squad's virtual laparoscopic cholecystectomy. I'm Dr. Susie. Your gallbladder is basically a place that stores bile
generated by your liver. As your body digests fats, your gallbladder pushes bile into the common bile duct, down into small pieces that block in cholesterol, and they can cause moderate to severe pain, gallbladder attack. Gallbladder removal is the best treatment for gallstones. There are two types: open gallbladder surgery and laparoscopic cholecystectomy. Open gallbladder surgery involves one large incision and removal of the gallbladder. It is performed when the laparoscopic method is not possible, or when complications or too much scarring from previous surgeries are found, or when the patient's blood won't clot well. This type of surgery causes more pain and longer recuperation time. A laparoscopic cholecystectomy, however, is the most common and often the best method to remove gallbladder. It is where the gallbladder is removed through several small cuts in your abdomen. The surgery is safe, and folks who have it normally recover within 1 week. There are a number of benefits to having laparoscopic cholecystectomy. Among them, you'll be able to eat food without pain in most cases. It eliminates any discomfort in the stomach lining, and in some cases, it relieves your upset stomach. However, if you have your gallbladder removed, you might experience chronic diarrhea, indigestion, trouble digesting, severe liver problems, fatigue, and rare but intense abdominal pain. The patient waiting for us has been suffering from pretty severe gallstones and get going. Nurses and anesthesiologists. We're going to make 4 small incisions, 1 right below the belly button and 3 others right over the abdomen. First, we'll disinfect the area where we're going to make our first incision. Good. Now take your scalpel and make a small incision right below his belly button. Nice and clean. We've got to see where we're going, so we'll first inflate his abdomen with a little carbon dioxide to have some room to work. Laparoscopic camera to help us. Slow and steady. You're doing a great job. And there it is. Can you move the liver out of the way using the clamp so we can get to the gallbladder? We have plenty of room to work now. Great. Now use the scissors to sever it. I'll hold the gallbladder in place while you work to cut it from the liver. Looks like you've done this before. We'll cut under the belly button, and our scope shows that and get him to a fast recovery. Patient is now in recovering and drink fluids easily. We'll also make sure he can walk on his own before we let him go. He'll probably have a small amount of diarrhea, and his doctor will probably have him on a special diet to follow for a few days. He should be ready to how we perform a laparoscopic cholecystectomy. You did a great job today. While you're here,